Hello friends, a very warm welcome to all of you on my official YouTube channel. My name is Ashutosh Bajpai and today I will cover about a very important topic, that is Indo-Israel relationship. This topic is very important nowadays and trending everywhere. Either if you talk about Twitter, YouTube, Facebook, everyone is talking about the Prime Minister's historic visit to the Israel, because he has become the first Prime Minister of India who has visited Israel the very first time. Because Israel, it's been 70 years, no prime ministers from the Indian side visited Israel, and this visit was also important because India and Israel was celebrating their 25th year of the diplomatic relationships. So without wasting even a single second of time, let's begin with the slide. And before I start, I'll let you know that I will cover in the slide about the history of the Israel and the formation of the Israel independent war, Israel-Palestine conflict, and relations with the Arab countries, Prime Minister's visit, and joint statement and MOU signed between both the countries and both the leaders. So let's begin. As we all know that Israel's maximum populations are Jewish, so let's start with the history of the Israel. The history of its Jewish people and their roots in the land of Israel spans 35 centuries. It is here that the culture and the religious identity of the Jewish people was formed. Their history and presence in his land has been continuous and unbroken, thoughtful the centuries, even after the majority of Jews were forced into the exile almost 2000 years ago. With the establishment of the State of Israel on May 14, 1948, Jewish independence was renewed. Here, with the help of this figure, just try to understand the location, geographical location of the Israel. You can see that the red portion is in Israel, how small this country it is, but you can say that the importance of political importance and the defense importance of this country is so vast. Israel, you can say that it's among the world top 10 countries. Israel's equipment are the world famous. Israel technologies are the world famous. Every country, you can say that even though America is afraid from the Israel's development, because Israel, in terms of either if you talk about the IT, if you talk about the agriculture, cybersecurity, in every terms, Israel is in the top, right? And next slide, I'll discuss about the geographical area of the Israel. Then it will make you understand exactly how important is this to understand the Israel and the Israel's development in a very short time. You can see here the geographical location of the Israel in this figure, and the first thing is to understand about the neighbor countries. So Israel is located at the eastern end of the Mediterranean Sea, where Europe, Africa and Asia meets. The country share the borders on Lebanon and Syria in the north, Jordan at the east, and Egypt to the south. For exam point of views, the neighbor countries of Israel's capital are very important. So let's go with the capitals. Syria's capital is Damascus, Lebanon, Beirut, Jordan, Amman, and Egypt, Cairo. Now about the governing systems. Parliamentary democracy means Israel has a parliamentary democracy, same like India, and there also the executive head of the country is prime minister, but although they have a president, similar like an Indian democracy. President of the Israel has a limited power, and the executive head is prime minister. Population, 43% of the world's Jews lives in the Israel, but one thing is very common for the Israel, like Israel considers every Jew, either he or she living in any part of the world, will be considered as a citizen of the Israel. The population of Israel is about 8.5 million, and out of them 74.8% of the population are Jews and 20.8% of the Arabs. 4.4% are identified as a non-Arab Christians, Baha'is and others. Founding of the State of Israel 1948. Israel's establishment as an independent sovereign state was officially declared in Tel Aviv on Friday, May 14, 1948 by Zionist leader David Ben-Gurion. The day the British mandate over Palestine was officially terminated in accordance with a UN Resolution 181.
means uh, the main name behind the Israel's independence was a Zionist leader, David Ben Gurion, same like a Mahatma Gandhi in India. He was the man behind the Israel's independence, and he was fighting. He was leading the independent war against the Britishers and for the favor of Jews. War of Independence. Let's discuss about the War of Independence. How Israel got the independence. When the UN voted to the partition, the mandate on November 29, 1947, Palestinians, Arabs, with the help from Arab states, launched attack against Israel to seize the entire mandate. On May 1498, Israel declared independence and was immediately invaded by the armies of 5 Arab nations: Egypt, Syria, Transjordan, Lebanon, and Iraq. The newly formed Israeli Defense Force (IDF) managed to prevail after 15 months of the war. See what happened when the UN voted to the partition the mandate on November 29, 1947 means जब UN ने पास किया या डिक्लेयर किया इसराइल को एज अ लाइक पैलेस्टीन और अरब कंट्रीज़ को हटा के एक उनकी जगह पे या उनसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहा ज्यूस लोगों के लिए जो इसराइल था with the help of Arab states launched attacks means then Palestine and Arabs with the help of other Arab states उन सब लोगों ने मिलकर इसराइल के अगेंस्ट एक वॉर लॉन्च कर दी on May 14, 1948 जब इसराइल अपना इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था was immediately at that particular time means immediately अरब कंट्रीज़ ने इजिप्ट सीरिया ट्रांसजॉर्डन लेबनान सभी ने अटैक कर दिया इसराइल पे द न्यूली फॉर्म्ड इसराइली डिफेंस फोर्स बट व्हाट हैपेंड यहीं से इसराइल का एक तरीके से राइज जो है वो सामने निकल के आता है कि कितनी एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ठीक है जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उसने कैसे 5-6 कंट्रीज़ को एक साथ और एक छोटी सी कंट्री ने इनको वॉर में क्या किया हरा दिया सेम थिंग हैपेंड विद द इंडिया एग्जैक्टली क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी वही काम किया था सेम थिंग हैपेंड विद द इंडिया व्हेन इन 1962 इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना both invaded to the India but India couldn't you can say India was not able to save its boundaries एंड चाइना ने कुछ हिस्से पे अधिकार कर लिया और पाकिस्तान ने पीओके बना लिया बट ऐसा इजराइल के केस में नहीं हुआ दैट्स व्हाई इजराइल इज अ वर्ल्ड फेमस कंट्री फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट एंड फॉर इट्स बाउंड्रीज सिक्योरिटीज Here I'll talk about the Israel today, the current situation of the Israel. Today there are 8.5 million Israelis, about 75% of them are Jews. Like other democratic multi-ethnic countries, Israel struggles with the various social and religious issues and economic problems. Like most of the countries developing the developed countries in their past struggled with the different issues, religious issues, economic issues, and also Israel was also one of them. It is a country of immigrants that often came to the country dispossessed. The biggest problem of the Israel is the immigrants. On the political front, most Arab and Muslim states continue to deny the Jewish states right to exist. Unfortunately, only 2 of the 22 Middle Eastern states have signed a peace agreement with Israel. That is Egypt and Jordan. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसराइल और मुस्लिम और अरब कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि अरब कंट्रीज़ को काट के ही इसराइल बना था तो जो उनका इसराइल का जो एग्जिस्टेंस था वो किसी भी अरब कंट्रीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है वो कंट्रीज़ आज भी अरब को मान्यता नहीं देते एक राज्य की वो अरब कंट्रीज़ के हिसाब से जो इसराइल है वो आज भी एक कंट्री नहीं है और उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है वर्ल्ड के मैप में सो इस वजह से लेके मिडिल ईस्ट में नियर अबाउट 22 कंट्रीज़ हैं ठीक है तो उन 22 कंट्रीज़ में केवल 2 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है इसराइल को एज ए स्टेट मान्यता दी हुई है और वो 2 कंट्रीज़ हैं इजिप्ट एंड जॉर्डन वाई इजिप्ट एंड जॉर्डन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड The ongoing Palestine-Israel conflict is complex with the challenges related to the borders, settlement, sovereignty and other continuous issues. डिस्कस करेंगे इसके बाद इसराइल और पैलेस्टीन कॉम्प्लेक्स पे बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसराइल और पैलेस्टीन की केवल हमारे लिए नहीं आई थिंक वर्ल्ड के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सेम लाइक कश्मीर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उससे भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये पैलेस्टाइन और इसराइल का
Let's discuss about the Israel-Palestine conflict. What is the Israel-Palestine conflict? In the first century, when the Jewish civilization in Israel was already over 1000 years old, Rome destroyed the Holy Temple in Jerusalem and conquered the Jewish nation. At this time, the Romans renamed the region Palestine and exiled the portion of the population. However, some Jews renamed. See what happened in the first century when the Jewish civilization in Israel was already over 1000 years old. Means जब जो Jewish civilization थी Israel में वो near about 1000 years रह रही थी, उसके बाद भी रोम जो था, रोम साम्राज्य था, उसने destroyed the Holy Temple in Jerusalem, जो इज़राइल लोगों का एक सबसे फेमस टेम्पल था जेरूसलम में, उसको क्या क्या तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया एंड कॉन्कर द ज्यूइश नेशन एंड उनके साथ युद्ध किया. एट दिस टाइम रोमन्स रीनेम द रीजन एंड उस टाइम पे रोमन जो थे उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर रीजन का जहाँ पे ज्यूश रह रहे थे उस पे मुस्लिम मेजोरिटी को बसा के उस पर्टिकुलर रीजन को नेम दे दिया पैलेस्टाइन एंड एक्साइल्ड अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. However, some Jews renamed और मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो मैक्सिमम ज्यूस पॉपुलेशन थी उसको वहाँ से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो ज्यूस थे वो वहाँ पे बच गए. Between 1517 and 1917, Palestine was a part of Ottoman Empire. Sorry, the region initially prospered under the Ottomans, and during the empire's decline, it was reduced into a partially populated, impoverished, barren area. लाइक 1517 और 1917 के बीच में पालेस्तीन जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. मीन्स ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही वो लोग रहते थे और रूल ऑटोमन एम्पायर का ही रूल था. द रीजन इनिशियली प्रॉस्पर्ड अंडर द ऑटोमनस, मीन्स शुरुआती दिनों में जब तक ऑटोमनस एम्पायर का रूल था तब तक वो जो रीजन था पॉपुलस था, मीन्स प्रॉस्परस था, आबाद था, खुशहाल था. बट ड्यूरिंग द एम्पायर्स डिक्लाइन, जब जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, इट वाज रिड्यूस्ड इनटू अ स्पार्शली पॉपुलेटेड, वो धीमे धीमे कम पॉपुलेशन वाला क्षेत्र होता चला गया और एट द एंड वो एक बैरन एरिया में तब्दील हो गया या एक बंजर भूमि में तब्दील हो गया. मीनवाइल द ज़ायनिस्ट मूवमेंट वाज इमर्जिंग इन यूरोप. उसी टाइम पे 19th सेंचुरी के आसपास जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट था वो यूरोप में उभर रहा था. इन द लेट 19th सेंचुरी, जनरेटेड बाय इंक्रीजिंग एंटी Semitism and violence against Jews in Europe, as well as the rising nationalism throughout the continent. See, एक तरफ जो था ज्यूस लोगों पे जो अत्याचार किए जा रहे थे यूरोप में, उसके अगेंस्ट में एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी वो उभर रही थी. साथ साथ यूरोप में एक नेशनलिज्म की बहार आ गई थी जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो कंट्रीज़ थी, कंट्रीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि कंट्रीज़ नहीं डेवलप्ड हुए थे, जर्मन्स थे, नाजीज थे या अदर जो कम्युनिटीज़ थे वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए थे. उन सब की डिमांड शुरू हो गई थी एक सेपरेट नेशन के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिए. उसमें से ज्यूस लोगों द्वारा इजराइल की भी डिमांड थी. The Zionists, whose goal was the return of the Jewish people to the sovereign state in the land of Israel, fostered increased Jewish immigration to Palestine and sought international political recognition of Jews' right to the independence in Palestine. दो ज़ायनिस्ट लोग जो थे जिनका जो मेन गोल था वो रिटर्न वापसी था, किसकी, ज्यूस जो लोग थे या ज्यूस जो कम्युनिटी थी उनकी वापसी था एक सॉवरेन स्टेट, किस, लैंड ऑफ इसराइल, उस हॉली भूमि या हॉली लैंड जो था उस पर एक सॉवरेन स्टेट था जिस लोगों के लिए. ये जॉनिस्ट मूवमेंट का मेन एम था. When the Ottoman Empire was defeated in World War I 1914 to 1919, its land were seized and victorious allies who carved the land into the new nation, which include Iraq, Lebanon and Syria. See, क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई या ऑटोमन एम्पायर जो परास्त हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ कंट्रीज़ को मिला के या कुछ कंट्रीज से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के एक न्यू स्टेट फॉर्म किया गया उस ज्यूस लोगों के लिए, दैट वाज इज़राइल. किन कंट्रीज से हिस्सों को काटा गया था? कंट्रीज वर इराक, लेबनान एंड सीरिया. One country is missing here, that is Egypt also. Yep. After the formation of Israel, Egypt, Syria, Transjordan attacked the newly created state, but Israel defeated them all and extended its boundaries and captured Gaza and West Bank, almost 50% area of the Palestine captured by the Israel. See, after the formation of the Israel, these countries, the Arab countries, because the formation of Israel was not
expected by these countries, so that's why these countries invaded to the Israel. But what happens in the reply? Israel uh, attacked, and Israel defended its boundaries and captured the Gaza and West Bank. And the important thing was that almost 50% of the area of the Palestine was captured by the Israel. Here it was the starting of the Palestine and Israel conflict. You can say that it was the start, it was the beginning of the Israel-Palestine conflict. When Israel defeated Egypt, Jordan, Lebanon, and other countries, so what happened? These countries, for these countries exactly, it was unacceptable defeat, because Israel was a newly formed state, and एक न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ने ऑलरेडी established countries को हरा दिया था एक युद्ध में, so that was unacceptable. So after that, what happened? Israel was forced to defend itself when Syria, Egypt, Jordan, and Iraq intensified their attacks, and Egypt illegally blocked Israel's access to international waters and expelled UN peacekeeping forces. 4 Arab countries mobilized more than 250,000 troops in preparation for all-scale invasion. Israel preempted the invasion in defensive war and managed to capture West Bank from Jordan, Gaza, and the Sinai Peninsula from Egypt, and the Golan Heights from Syria. उस युद्ध के बाद क्या हुआ? इन सारे जो कंट्रीज थे, ठीक है, इन्होंने फिर से एक 250,000 ट्रूप्स को प्रिपेयर किया इसराइल के अगेंस्ट, और इसराइल पे फिर से अटैक कर दिया. लेकिन इस बार क्या हुआ? इसराइल ने सिर्फ, ये जो युद्ध था ये सिर्फ 6 दिन चला, और इस 6 दिन के ही युद्ध में इसराइल ने क्या किया? कैप्चर्ड वेस्ट बैंक फ्रॉम जॉर्डन. जो वेस्ट बैंक का हिस्सा था वो जॉर्डन से कैप्चर कर लिया, गाजा भी वेस्ट जॉर्डन से कैप्चर कर लिया, एंड सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट. जो सिनाई पेनिनसुला एक बहुत ही बड़ा एरिया था सिनाई पेनिनसुला का इजिप्ट का, वो भी इसराइल ने कैप्चर्ड कर लिया, एंड गोलन हाइट्स फ्रॉम द सीरिया. और गोलन हाइट्स का जो हिस्सा था वो सीरिया से कैप्चर करके अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज कर लिया. I will try to make you understand about the importance of Six-Day War in terms of the Israel. जो 6 डे वॉर था वो इसराइल के टर्म से कितना इंपॉर्टेंट था. सी आप देख रहे हो जो हिस्सा है सैफ्रॉन वाला जो हिस्सा है ये इसराइल का एट प्रेजेंट का जो एरिया है ये इसराइल है, ठीक है. उसके बाद वेस्ट बैंक आप देख रहे हो मैप पे, गाजा स्ट्रिप है, और एक लाइंड एरिया है जहाँ पे रेड से इजिप्ट का एरिया, सिनाई पेनिनसुला का जो एरिया है, ठीक है. इस हिस्से पे क्या किया था? इसराइल ने कैप्चर्ड कर लिया था. गोलन हाइट्स ऊपर देखिए आप, सीरिया के बॉर्डर पे गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था. वेस्ट बैंक को इसराइल से जॉर्डन से ले लिया था, ठीक है. और जो पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वो भी, ये भी जॉर्डन का ही एरिया था, इसको भी इसराइल ने कैप्चर करके अपनी बाउंड्रीज को अप टू 70% तक एक्सटेंड कर लिया था. अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, यू कैन सी लाइक सिनाई पेनिनसुला, द एरिया ऑफ द इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला, इट्स आई थिंक दिस एरिया इज इक्विवेलेंट टू द करंट एरिया ऑफ द इसराइल. सो इतना बड़ा एरिया इसराइल ने कैप्चर्ड कर लिया था, और एक अकेला नेशन था जिसने इस वॉर में, जिसके चारों तरफ जो चारों नेबर्स हैं वो क्या हैं? उसके एनिमी नेबर्स हैं. स्टिल उसने अपनी सॉवरेनिटी को क्या किया था? बरकरार रखा था. दैट्स व्हाई इजराइल इज वर्ल्ड फेमस, एंड इजराइल इज नोन फॉर इट्स डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफरेंट टैक्टिक्स. After the Camp David Accord 1978, Sinai returned to the Egypt, and Egypt recognized Israel as a nation. But Palestine Liberation Organization headed by Yasser Arafat continued with its movement for independent Palestine. What happened after the 6-day war when Israel captured the almost area of the Egypt and West Bank, Gaza, and Golan Heights from the different countries? So then after Camp David Accord, there were some, you can say, summit were there, which is famous by the Camp David Accord in 1978. Under of this summit, under of this peace conference, you can say that Sinai Peninsula returned to the Egypt. जो Sinai Peninsula का एरिया था वो इजिप्ट को वापस कर दिया गया, एंड इजिप्ट ने उसके बदले में क्या मिला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम था. इजिप्ट ने उसके बदले में इसराइल को एज अ नेशन मान्यता, यूनाइटेड नेशन में इसराइल को एज अ नेशन मान्यता दे दी, और जॉर्डन ने भी यही काम किया. बट पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय यासिर अराफात continued with its movement for independent Palestine. लेकिन जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर थे यासिर अराफात, आई थिंक ही इज स्टिल अलाइव, उन्होंने अपना जो मूवमेंट था वो जारी रखा इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन को लेके. उनकी मांग अभी भी जारी है, और अभी तो उनके साथ साथ
जो एक और नया संगठन है हमास, वो भी इसके लिए फाइट कर रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक है। आप देख सकते हो जो अगेन जो ग्रीन एरिया है वो इसराइल का है, और द सफरान एरिया एंड गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे आज भी पैलेस्टाइंस ही रहते हैं, ठीक है। बट दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इसराइल्स, एंड जो पैलेस्टाइन है उसको अभी भी एक सॉवरेन नेशन का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसा किस लिए है, वो इसराइल की वजह से है। पहले जो पूरा एरिया था ग्रीन वाला आप है, ये एरिया क्या था, ये पूरा एरिया पैलेस्टाइन का एरिया था, ऑलमोस्ट एरिया पैलेस्टाइन का था। लेकिन अब इसराइल ने अपनी पावर बढ़ाते हुए क्या किया, उसकी बाउंड्रीज को, अपने एरिया को, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लिया, और वेस्ट बैंक और गाजा का एक छोटा सा हिस्सा पैलेस्टाइन के हिस्से में ही बचा हुआ है एट प्रेजेंट, ठीक है। और पैलेस्टाइन के मूवमेंट को जो हेड कर रहे हैं, ही इज़ मिस्टर यासिर अराफात, and his organization, that is a Palestine Liberal Organization, and one newly formed organization is Hamas. However, I'll begin with India-Israel relation, because India-Israel celebrating 25 years of their diplomatic relations started in 1992 under the then Indian Prime Minister Narasimha Rao. Why not before? Reason, India was very close to the Arab nations for crude oil, and Arab-Israel conflict, as already discussed before. Israel has been a trusted supplier of defense equipment so far for India, and in 1997, when relationship had been established, then first time in 1997, Israel's President Mr. Ezer Weizmann visited India and met his counterpart Mr. Shankar Dayal Sharma and then PM H.D. Devi Gowda. Means when India established his relationships with Israel in 1992, after 5 years of the diplomatic relationship, first time in 1997's first Israel president visited to India and met with Mr. Shankar Dayal Sharma and the Prime Minister Devi Gowda. And after that, in 2003, first Israel Prime Minister Ariel Sharon visited to India and had a bilateral with their counterpart Mr. Atal Bihari Vajpayee. It's been 70 years, but no Indian PM visited to Israel. But first time, on the 4th of July, Prime Minister of India Narendra Modi went there and had a bilateral with his counterpart Mr. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. As you can see here on the picture, a handshake between the two country head, Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi and his counterpart, Israel's counterpart Mr. Benjamin Netanyahu. This information is based on the External Affairs Ministry of External Affairs website, and the information now I'm going to discuss is a part of the joint statement that is released by the Ministry of External Affairs India. The 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, Prime Minister Narendra Modi of India visited Israel from 4 to 6th of July 2017 at the invitation of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel. This historic first visit by an Indian Prime Minister to Israel solidified the enduring friendship between their peoples and raised the bilateral relationship to that of the strategic partnership. Means under of this relationship, under of this tour of the Prime Minister of India, both the country had discussed about strategic partnership and how we can go further and how we can more strengthen our relationships. Here are some MOUs signed between India and Israel during the visit of Prime Minister of India Mr. Narendra Modi. MOU signed between the Department of Science and Technology India and National Technological Innovations Authority Israel for setting up India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund. मीन्स किस बारे में डिस्कशन हुआ, MOU जो एक साइन किया गया वो था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे. एंड सेकेंड वन वॉज बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन of the Republic of India and the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resource of State of Israel on a national campaign for water conservation in India. Means water conservation जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में,
ठीक है, उसके लिए भी दोनों कंट्रीज़ के साथ में एक एग्रीमेंट और एमओयू साइन किया गया। थर्ड एमओयू है बिटवीन यूपी जल निगम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड वाटर रिसोर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इजराइल ऑन स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया। मीन्स यूपी जल निगम के बीच और इजराइल गवर्नमेंट के बीच किसके लिए, एनर्जी एंड वाटर रिसोर्स ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल ऑन स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया। मीन्स स्टेट यूपी में जो वाटर स्टेट है वो स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया। मीन्स यूपी में वाटर की जो कंडीशन है, ड्रेनेज सिस्टम है, इन सब को लेके हम कैसे दोनों कंट्रीज साथ में आके कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो उस पर भी एक एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट एमओयू जो है वो इंडिया इजराइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3-year वर्क प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर 2018 to 2020। एग्रीकल्चर को लेकर 3 साल के लिए एमओयू साइन किया गया। प्लान ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड इजराइल स्पेस एजेंसी ISA रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन इन एटॉमिक क्लॉक। मीन्स एटॉमिक क्लॉक के लिए एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इजराइल स्पेस एजेंसी ISA। And next one is MOU between the Indian Space Research Organization and the Israel Space Agency regarding the cooperation in GEO-LEO optical link। means internet speed and the optical fiber network को लेके MOU साइन हुआ है। MOU between the Indian Space Research Organization ISRO and the Israel Space Agency regarding cooperation इन द साइबर सिक्योरिटी। मीन्स साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक एमओयू साइन किया गया है। फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यूज इट वाज अ वेरी स्पेशल विजिट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज द वेलकम ही रिसीव्ड देयर वाज अनएक्सपेक्टेड। and I will conclude this video here, and if you like this video then please don't forget to subscribe my channel, and in case you have got any query or question then mail me at bajpai.ashutosh@vendex.com. You can follow me on my Twitter as well. My Twitter handle is at ashutosh203222, and my Facebook page is ashu009 proofnet@gmail.com. and here is one request, and if you need a better quality then please use earphone while watching this video. Thank you, cheers, enjoy the day. I'll back with a new video.